Hello students, so in the previous video lecture you have seen how we can define a constructor, okay, and then how we can define the destructor as well, okay. So in this video lecture I am going to discuss with you a class programming, okay, and as usually we used to do with the student class, okay. In this video lecture also I'm going to discuss with you a programming which will be based on your student class, okay. So generally a student class will have student name, roll number, section, address, so on so on. You have done so many programming also, okay. So let us start and continue with this constructor, okay. So here first of all we need to create a class called suppose student, okay. Okay, so student, and under private section suppose I'm declaring variable as integer roll, okay, and then suppose I'm declaring another variable, suppose uh, uh, character string character, suppose name. The size suppose we are declaring here 20, okay. Let's take only these two variable only, and then under public section we are going to define the constructor, okay. So first of all I would like to show you how this default constructor will work, okay. So if you remember डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम क्या था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बेसिकली हम लोगों ने यूज किया था टू इनिशियलाइज द डिफॉल्ट वैल्यूज टू द वेरिएबल और कैसे टू द ऑब्जेक्ट्स, ओके. सो ये जो है रोल नंबर एन, सॉरी हाँ दिस इज CHAR, हाँ, ये जो रोल नंबर एंड नेम हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, दिस विल बी द व्हाट यू कैन से इंफॉर्मेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट विच यू आर गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, ओके. तो पब्लिक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे यहाँ पे, जिसका काम होगा डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करना, किसका, रोल नंबर एंड नेम, ठीक है. तो let us create the first constructor, or you can say default constructor. So default constructor, what is constructor? Special member function whose name is similar with the class name. Class name क्या है, student. So student default constructor will not accept any argument, or it will not have any return type also, okay. So how we are going to, what will be the definition for this default constructor, okay. Here we are going to initialize the default value of roll number and name. So roll number will be, suppose by default I'm giving here 1, okay, and then name, suppose I'm giving here name as, suppose my name Faizul, okay. So this 1 and Faizul is the default value, okay. तो जो रोल नंबर है और नेम है, यहाँ पे ये 1 and Faizul will be initialized to name, okay. Next, suppose I want to change the roll number and name, okay. So for that I want to declare here one parameterized constructor. Say here I want to pass this roll number and name from the main, or you can say I want to pass this as user defined. So for that while defining this parameterized constructor we have to declare here two argument for holding the value of roll number and name, ठीक है. मतलब जो रोल नंबर एंड नेम मेन फंक्शन से पास होकर यहाँ पे आएगा, उसको रखने के लिए हम लोग को यहाँ पे दो आर्गुमेंट चाहिए, ठीक है. तो फॉर रोल नंबर सपोज दिस, सिंस दिस इज इंटीजर, सो इंटीजर आई एम गिविंग हियर सिंपल r, okay. And for name I'm giving here string is a class, okay. So string, suppose I'm giving here name for name, suppose num, okay. So these two variable I have declared here, and जो वैल्यू वहां से पास होके आएगा, कहाँ पे होगा वैल्यू, में होगा रोल नंबर एंड नेम में होगा क्या, नाम में होगा ये नेम, ठीक है. दैट मीन्स व्हाट, हम लोग का वेरिएबल क्या है, रोल. सो
our roll number, new roll number will be what? R, क्योंकि वैल्यू पास होके R में आएगा. And then new name, this name variable, okay, name will be equal to नाम, क्योंकि यहाँ पे पास होके आएगा. ठीक है, तो ये है हम लोगों का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और ये है हम लोग का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. नाउ आवर ड्यूटी इज टू डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट. अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने दो कंस्ट्रक्टर यूज किया है. एक है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड अनदर वन इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. तो to call this default constructor we have to create the object, or you can say the moment we create the object automatically default constructor will be called. But then again वहाँ पे एक क्वेश्चन होगा. सपोज मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कॉल किया है S1. So the moment we call S1 automatically constructor will be called. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर है. ठीक है, so when we create this S1, which one will be called? So it is very simple. Since this S1 is not having any value, that means the moment we create S1 automatically this default constructor will be called. The moment this default constructor will be called, the value of roll number will be what? 1. The value of name will be Faisal here. Okay, now how, question is, will this S1 will call this parameterized constructor? No. Why? Because it has two argument. While creating we are not passing any argument, or you can say so any value. That is why with this S1 we cannot call this parameterized constructor. So to call that, again we have to declare another object, suppose S2. Okay, S2. At this time we have to pass here some values. Value means what? Suppose roll number, this time I'm giving here 10, and value I'm passing here suppose Mridul. Okay, so you can see here this is integer value, so we are not giving here any quotation, and here this value is what? Character or string value, so we are giving here quotation. Okay, so now suppose I want to see the value of roll number and name. Okay, now let's see this. So cout suppose roll number equal to, number will be where? In row double L. Okay, here we'll have roll number. Okay, and then suppose I want to see the student name. Okay, name, so name will be in name. Okay, done. But can we call this roll number like this? Because this is private. Can you call this? No, we cannot call. Can you call with the help of object name? No, we cannot call the object name also. Why? Because roll number and name is private, and private members we cannot call from the outside class. Clear or not? ये हम लोग मेन क्या है, मेन क्लास के बाहर है. बाहर हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो ये रोल नंबर एंड नेम जो है ये कहाँ पे है? यहाँ पे है, प्राइवेट सेक्शन के अंदर है. तो इफ वी कॉल लाइक दिस, सपोज S1 dot roll number, and if we call S1 dot name, that means what? By this default, or can say that for this object S1 we are calling what? Roll number and name. तो यहाँ पे ये कॉल नहीं हुआ क्योंकि ये रोल नंबर एंड नेम क्या है? प्राइवेट है, और प्राइवेट को हम लोग डायरेक्टली ऐसे कॉल नहीं कर सकते हैं. सो लेट्स रन दिस. I'll show you the error. As you can see here, some error is given here. So you can see here
integer student is private. Here also name is private. That means we cannot call. Now what is the solution? How we are going to call this? To call this, we have to define here another function for displaying the values. Say we have void display. Void display. So under this section we are going to display these things. Okay, I'll not write, just I'll copy paste. Okay, this see out and all, ये क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. अब देखो यहाँ पे, but this time we don't have to write s1 dot rule because this rule number, or you can say this display function is what? This display function is inside. This display function is inside the class itself. ठीक है, तो ये डिस्प्ले क्या है? मेंबर है किसका? ऑफ स्टूडेंट. दिस प्राइवेट मेंबर्स आर अवेलेबल ओनली विद इन द क्लास. ओके, तो क्लास के अंदर क्या है? डिस्प्ले है, तो ऑटोमेटिकली दिस विल रोल नंबर विल डिस्प्ले बिकॉज this display function will have the access of this private members also. Okay, now how we are going to display? Just we need to call the function. Suppose s1 dot display. So what will be the answer? Tell me. So when we call s1 dot display, that means what? We are calling the default constructor. Till now we are not calling the parameterized constructor. ठीक है, to call parameterized constructor we have to call this s1. We have to write s2 dot. Why? Because यहाँ पे this जब हम लोग s1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर will be called. Okay, and when it is called, the value will be initialized as 1 and Faisal. And for displaying we will have s1 dot display. So let's run this function and we'll see the output. Again we are having some error here this time. Okay, so student increment type. Okay, type is here, we are giving here let's make this as string, suppose name. This time we are not going to give any size here. Okay, now let's run this function. Okay, so you can see here we are getting the output as 1 and Faisal only. Okay, why? Because we have called only s1. Okay, s1 means what? S1 is a default constructor. He will call default constructor. Why? Because this s1 under while creating s1 we are not passing any argument, so automatically this will call the default constructor. And for displaying we are calling s1 dot display. That means for object s1 we are calling. And remember this s1 means what? Say in real life entity there are two students. s1 means one student, s2 means another student. Okay, so in order to s1 का जो वैल्यू था वो हम लोग डिस्प्ले कर लिया है. ठीक है, now suppose if you want to see the second student's roll number and name, then you have to call s2 dot display. This time you'll get both the output. Okay, let's see. Yes, you can see here first one is also you are getting 1 and Faisal, and second one also you are getting 10 and middle roll number. Okay, so you can say this is one student, this is another student. And I hope this default constructor and parameterized constructor concept is clear to you all. Okay, suppose this s2 we are giving here the default value 10 and middle because there are many students. So if you want to change, then you have to declare here some, or you can say two variables, say integer r and okay integer suppose roll, and then suppose string name suppose. Okay, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सी आउट enter
द रोल नंबर, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सी इन, कहाँ पे जाएगा, रोल में जाएगा, ROL, फिर से for you want to ask some other students name, then again you have to give enter the name, तो यहाँ पे क्या होगा, NA में जाएगा, ओके। तो जो नया स्टूडेंट का हम लोग डाटा लिया है वो कहाँ पे जाएगा, रोल नंबर, रोल पे जाएगा और NA में जाएगा। अब जब हम लोग पास करेंगे और अब जब हम लोग suppose you want to call this parameterized constructor student, so in that case we have to call this what you can say S2, okay, but this time we cannot give default value, we have to give the variable roll number, नया स्टूडेंट्स का नाम कहाँ पे होगा, NA में होगा, and this time this is variable, so we don't need quotation also, so NA, okay. Let's run this program and you see the effect, okay. See, as you can see here, they are asking enter the roll number, say I'm giving here 30, enter the name, say I'm giving here suppose Vikas, okay. You can see here output, the first one is it is default value itself, okay, we are not changing this, as you can say default constructor का पर्पस क्या है, to initialize the default value, तो ये default value already है यहाँ पे। अब जब हम लोग नया स्टूडेंट्स का बारे में बोल रहे हैं तो वो नया स्टूडेंट्स क्या है, वो हम लोगों ने यूजर से लिया है, रोल नंबर उसका है सपोज 30 और उसका नाम है सपोज विकास, ठीक है। एंड यू कैन सी हियर रोल नंबर 30 एंड नेम इज विकास, क्लियर टू यू ऑल। अब suppose in this case if you want to read some other students, again you will be asked enter your roll number and enter your name, this is how we used to call। अब ये default constructor and parameterized constructor, I think it is clear to you all, okay। Now suppose you want to define here a copy constructor, okay। copy constructor क्या होता है, जिसमें argument होगा as an object, ठीक है, और जिसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो प्रीवियसली डिफाइन होना पड़ेगा, ठीक है। सपोज आई एम डिक्लेयरिंग अनदर कंस्ट्रक्टर दैट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर, इसका नाम भी सिमिलर विद द क्लास नेम स्टूडेंट, बट देन हियर देयर विल बी वन आर्गुमेंट एंड दैट आर्गुमेंट इज नॉट लाइक दिस नॉर्मल आर्गुमेंट, हियर द आर्गुमेंट विल बी व्हाट, आर्गुमेंट विल बी an object itself, okay। For that again we have to write the class name, and for address we are giving here ampersand symbol, and then a object, user defined object, say obj, okay। तो how we are going to define this, see ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसमें अंदर क्या होगा, अल्टीमेटली वी आर रीडिंग द रोल नंबर एंड नेम इटसेल्फ, ओके। तो इसके अंदर क्या होगा, यूजिंग दिस कॉपी कंस्ट्रक्टर, रोल नंबर क्या होगा, रोल नंबर इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर रोल इक्वल टू क्या हुआ था, R होके आया था, और यहाँ पे क्या था, NAM था, क्योंकि डायरेक्टली वैल्यू R में आया था रोल नंबर एंड नेम आया था NAM में आया था, ये होगा। अब यहाँ पे देखो OBJ में क्या है, एक ऑब्जेक्ट पास होके आएगा, ऑब्जेक्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट में रोल नंबर भी होगा, नेम भी होगा, ठीक है। तो फॉर दैट हाउ वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कॉल लाइक दिस, ये जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट किया है, दिस ऑब्जेक्ट रोल नंबर कैसे मिलेगा, OBJ डॉट, अब रोल नंबर में, अब यहाँ पे क्या हम बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे रोल नंबर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो OBJ डॉट रोल नंबर, ठीक है, क्योंकि रोल नंबर कहाँ पे है, रोल नंबर आफ्टर कॉलिंग दिस रोल नंबर वैल्यू इज 1, आफ्टर कॉलिंग दिस रोल नंबर विल बी व्हाट, द यूजर डिफाइन 1, ओके। So ultimately value are in this variable roll and name. So in terms of copy constructor also we have to do like this, roll number equal to obj dot roll number, मतलब जो earlier value है वो वहां पे जाएगा, ठीक है। And for name also कहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट में, सो obj dot नेम कहाँ पे होगा, NAM में, वो ऑब्जेक्ट का नेम में होगा, ठीक है। This is how we used to define.
अब इसको हम लोग वैल्यू कॉल कैसे करेंगे दिस कॉपी कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। तो ये था हम लोग का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब to call this copy constructor again we have to define, or you can say create another object student, say s3, but this time we are calling the copy constructor. That means we cannot give here normal variable here, some default values also. Here we have to pass the object itself as argument. So if you pass in bracket s1, then this will give the normal one, that means roll number 1 and Faizul, okay. But if you give here s2, you will get the second one, that means the user defined one, okay. Let's run this. I'm giving here for the first time s1. So this is copy constructor. This is copy constructor. Why? This s1 is an object, and this object you can see here we have created s1, this object. So this s1 we are passing here, and this will be coming, and it will be this obj, okay. That means obj will have equal value equal to s1, but s1 will have two value, roll number and name. That is why obj dot roll and obj dot name, and this will be assigned to roll number and name accordingly. Clear? So ये भी हम लोग का कॉल हो गया है. Now let's run this and you see the effect. ठीक है. Again they are asking, suppose this time roll number 12 and this time Aman. ठीक है. You can see here roll number equal to 1, name equal to Faisal, and again roll number equal to 12 and name equal to Aman. ठीक है. So ये जो है you can see here this s2, okay, for we are not calling for s3. So in order to see the effect we have to call s3 dot display again. Now let's see the effect now, okay. And the roll number suppose 12 again, suppose Oman, okay. You can see here they are displaying roll number 1 and Fazil. This is why? Because of default constructor, okay. Second thing is you see here roll number equal to 12 Oman. This is for what? Parameterized constructor. And third time you can see here roll number equal to 1 and name equal to Faizul. This is similar with the first one. Why? Because we have copied the object s1 to s3. Obviously these two will be same here. And while copying as a whole we cannot copy, we have to call separate roll number one time and this name also second time. How? This is how we copy it. You can see here roll number equal to object of roll number and name equal to object of name. तो you can see, just remember like this, ये जो object है इसमें ये जब हम लोग s3 का हम लोग कॉल किया है तो s3 में क्या आ रहा है s1. अब रिमेंबर यहाँ पे s1 में क्या है, s1 में दोनों है, नेम भी है रोल नंबर भी है. That means this s1 is carrying here value roll number and name, okay. So roll number will be equal to obj dot roll, मतलब जो s1 का रोल नंबर था वो obj का रोल नंबर हो जाएगा. नेम में क्या होगा, नेम इक्वल टू obj डॉट नेम, मतलब s1 का जो रोल नंबर था वो दिस obj का रोल नंबर सेम होगा. ठीक है. नाउ ये जो है ना, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है s3, easily you will identify that this is a copy constructor. Why? Because this s1 is what? A constructor already we have created here or declared here, okay. Now if you pass this object as s2, you will get, see the effect here. Suppose roll number, suppose this time 15, okay. Say this time Zakir, okay. You can see here roll number 1 Fazil. This is for default constructor. Again you can see here this is 15 Zakir, last also 15 Zakir. These two is similar this time. In earlier cases the first one and last one was similar. Why? Because we copied s1, this time we copied s2, okay. That is why these two is similar. Clear copy constructor. Now ये जो हम लोगों ने क्वेश्चन कभी कभी आता है, ये s1 ब्रैकेट में हम लोगों ने लिखा है, ठीक है. इसको हम लोग बोलता है implicit call. Remember,
sometimes in exam they will give two statements like this. Okay, say student s3 suppose equal to s2. ठीक है, ये दोनों जो स्टेटमेंट है ना, दोनों का काम एक ही है, इन दोनों का काम एक ही है। डिफरेंस ये क्या है, पहला वाला ये जो है इसमें ये होगा implicit call and second one is explicit second one is explicit call. Okay, so if we comment this, okay, now we are calling the copy constructor with this s3 equal to s1. Let's see it will work or not. See, suppose 16, suppose name is Boktiar. You can see here name 1, this also working. Okay, that means while calling this copy constructor, either you can call like this new object, this s3 is new object, and we are passing the argument as object which already we have created here s2 here. Okay, and we can call like this also, new object equal to the object which we are going to copy. Okay, I hope this concept is clear to you all. Okay, and one more thing we left here. Suppose for destructor, suppose you want to create define the destructor. So destructor means what? Destructor will give like this. Say you can define here also, destructor will also have the similar name with the class name. So class name is student. Here this time also there will be no argument here at all, but constructor can have argument. But difference will be here we have to define this till symbol, एंड इसमें लॉजिक हम लोगों को लॉजिक की जरूरत नहीं है, इसका पर्पस क्या है, टू डिस्ट्रॉय द मेमोरी स्पेस. ओके, तो वी विल जस्ट गिव ए मैसेज हियर, we'll just give a message here, destructor is called. ठीक है, so just simply message will do, because इसका काम ही क्या है, टू डिस्ट्रॉय द मेमोरी स्पेस फॉर द ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट क्या है हम लोग का, तीन ऑब्जेक्ट है. ओके, अब देखो डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग को s1 डॉट स्टूडेंट वो डिस्ट्रक्टर सेपरेटली कॉल करने की जरूरत नहीं है. ऑटोमेटिकली जब कंपाइलर पूरा ये जो स्कोप है, सपोज ये हम लोग का ड्राइवर फंक्शन है, तो इसके अंदर है वन बाय वन ही विल एग्जीक्यूट दिस. आफ्टर ही कम आउट ऑफ द लूप, automatically this destructor will be called and all three objects will be removed from the memory space. That means s1, s2 and s3 will be removed from the memory space. Clear? Let's run this. Suppose we have here 16 roll number. Okay, suppose here I'm giving student name as suppose Thapa. Okay, you can see here roll number 1 Faizul, 16 Thapa. This is because of copy constructor. And you can see here destructor is called. 3 times destructor is called. Why? For 3 object. That means when this destructor is called, that means the object 1 is removed, second time this object 2 is removed, and third time object 3 is removed. So this is how destructor also work. I hope this example makes all concept clear to you all. Okay, if you have any doubt you can contact me, okay, directly. So in the next classes we are going to learn about what is inline function and what will be the static data member and static member function. Okay, so with that chapter 5 also will be completed. See my dear students, we have almost learned about class and object programming. It is my request to you all, please go through the concept for object and
classes programming. Okay, because after chapter 6 we are going to learn about data structure and all. Okay, so during these online classes for me actually it is really helpful because in I can show you practically how we can do it. Okay, and I hope you all understood this concept. Okay, if you still have any doubt, any query, you can call me directly. Okay, so with this I'll stop today. Okay, thank you, we'll see you next week.